टेस्टिंग में इतना पैसा क्यों डेवलपमेंट करें हम लोग नहीं ये outer query becomes light because the inner query is lighter. So inner query is light, then outer query becomes lighter, then the output comes out faster. Okay. And frankly telling, in IT you just have to stay for 10 years. The song मेरा इंतकाम देखेगी, शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना या Hello guys, it's 4:05, so let's not waste your time. Let's respect everyone's time. So I hope everybody is comfortable in English. Yes, sir, comfortable. Yeah. Yes, sir, we are comfortable. Okay, fine. So I'll try to if you're not comfortable, I mean try to speak in Hindi English mix so that everybody is comfortable, like our Hindi English type. Anyways, I'm happy that you all joined and thank you for making time. And yeah, I have a very busy schedule, but I thought Saturday would be a good day because at least I have some spare time. Okay, so my name is Krishna, and basically I stay in Bangalore, Karnataka. So I'm currently a big data tester. Yeah, that's big data testing, and mostly I worked on ETL testing, data warehouse testing. So initially, most of you would have seen my podcast with Technical Suneja and e-learning bridge. So these two podcasts has got a very good response, where I've shared my journey from being a technical support engineer, starting my career in 2017, being a technical support engineer, and then traveling to big data testing, and how things changed from 3.5 lakhs to 35 lakhs. And I know many of you would have seen those videos, and that's why you followed me on LinkedIn and got inspired by it. I'm really happy that you are all inspired, and I know most of you can relate to my story and relate to my circumstance, what I have gone through, and most of you must be going through, or might be even more challenging, or might be somewhere close to that. So that is why I'm taking this initiative to help you all, those who have not got no adequate guidance on how IT is and how should we approach our career. So I just want to make things easy for you so that you don't make the same mistakes that I have made in my life, in my career, so that whatever I have achieved in 5 years, I would like you all to achieve in just 1 year or maybe less than that. So that's why मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग मेरे एक्सपीरियंस का ना फायदा उठा करके अपने जो भी गलतियां हैं वो जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी सीख जाएं, और फिर यू नो कम अप टू अ वेरी गुड becoming a good IT engineer. So that's all I have to speak. And as we discuss your questions, so in between I may add some stories or some extra additional points or tricks or whatever that comes to. Okay, so we can start with questions. Whoever is interested, please, because I'm the thing why I have made this live session is many of you are asking for guidance, and I have the same 24 hours. So I need to work, I need to give time to my parents, family, and then I have other activities also to do, which I take care personally also, and other things. So that way it becomes really tough to give time to each and everyone. So if I just have these sessions, you just share just ask your questions, so that your question might be applicable to a lot of other crowd. So that way I don't give repetitive answers, so it will be helpful for everyone. So that way I just thought it's not something, if you are thinking that I'm doing this for popularity or name and fame or anything. I could have done anything else for name and fame for sure, not just sitting here and spending time with you all, obviously. I know, I hope everyone understands. So that way I just don't want to waste everyone's time, so that's why I started early. I know if I give some more time, many others will join. So let's just get started. Okay, yeah, please, you can start with your questions. So just take
30 seconds to 1 minute to frame your questions. And it would be nice if it is generic, and if it is something personal, then let's complete generic questions and then we'll take a personal question. And if it can be made into generic, like you can express whatever you want to ask personally, so just try to frame your question in that way. Hello. Hi, Yeah. Krishna. This is Ruchita. I'm from MP. I have completed my BE in 2018. As I am from non-IT background, I have completed my BE in electrical and electronics. Mhm. Then I have started preparing for competitive examinations. Uh, Now I want to switch my career and I start in IT sector. Mhm. So how should I start and how should I cover this gap? I just want to ask this. Yeah, okay. Sure. Your name is Rijita. How do you pronounce your name? Yeah, Rijuta. Rajita. It's Okay. Rijuta. Yeah. Rajita. Okay. I'll try my Thank best. you so much for Yeah. this session, first of all. Yeah. Okay. So I hope many of you must be having the same question. So see, what competitive exam are you preparing, if I may know? PSC, State PSC, Civil PSC. Services. Oh, I know PSC. I've seen the movie. Which is that movie? The song "मेरा इंतकाम देखेगी शादी में जरूर आना. शादी में जरूर आना." Yeah. Uh, Yeah. Inspiring movie, good movie. So Yeah. yeah, for 4 5 years around you would have spent. Yeah. Okay, so no Approx four worries. years, four Mhm. and a half. Yeah, I mean, if you don't mind, if you can come on camera, at least others can see. We'll upload one video before and after. Maybe after 6 months, you crack interviews. Okay, okay, sure. Yeah. Uh, Hi. Let me just spotlight this. Yeah. Okay, Ruchita, don't worry. जो हो गया सो हो गया. Whatever has happened. Yeah. So don't worry about it. I know there will be a lot of pressures from your family also. Yeah. Girls have a different pressure. So what you can do is now start your preparation. The easiest will be ETL testing is what I think, because for automation you will need to learn Java or Python, Selenium. A lot of things are there. A lot Yeah. of frameworks, a lot of languages. So the best would be ETL testing. So what you can do is you can learn whatever the article I've written. So you can go through those topics. Theoretical part you can study, and SQL you can start practicing. So these two are the major crucial thing. If you do it individually, so say for example you do it by personal effort, so it may take up to 3 months to 6 months minimum, and then to crack interviews it may take 2 more months. So overall 8 months it may take. But if you have a institute where you can join, at least theoretically if you learn ETL testing, then practical part obviously you can learn from me, or practical part you can practice, and then from there forward, how to create resume and how to crack interviews. For that I can guide you. So you can start like that. At least theoretical part you can study, and since you don't have any other obligation or you don't have any other commitment to make now, so you can dedicatedly spend 8 to 10 hours or maybe 12 hours. Obviously you Yeah. would have studied so much for those Mm-hmm. exams, so you can study for at least some more Yeah. time. So I guess this would be your the final thing that you can learn the moment you crack an interview. Obviously the problem is 4 5 years of gap is there. So what you can do is you theoretically part you complete this, and how project happens, how project works. For that I can guide you. You can just be connected on LinkedIn, and I can guide you how project works, and maybe some practicals also we can do. And maybe I'll just try to find some resources where you can practically practice. So those things we can practice, and then you can start giving interviews. Make sure, so what you can do is your performance in the interview should be so good that it overshadows your gap. Okay. 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 And frankly telling, in IT you just have to stay for 10 years, and within 10 years you will find some alternative way to make money. Or even if you're not
finding any alternative, just whatever money you earn, if you just save it, not just save, invest it somewhere. So within those 10 years, you can stop working and happily live your life. Okay. तो लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल का तो सोचना नहीं है, 10 साल का सोचिए। 10 साल में आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप जिंदगी भर नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए आराम से जी सकते हैं। Okay, अनटिल अनलेस okay. अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ऊंचे कर लें, तब वो इतना ठीक है। और उस तब तक आपको बहुत सारे आइडिया भी आ जाएंगे, बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आ जाएंगे। और कुछ नहीं मिलता है तो मेरे को पिंग करना, मैं कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट निकालूंगा, आप मेरी टीम में Okay. जुड़ जाना, ठीक है। यू आर द फर्स्ट सेट ऑफ Okay, पीपल हु okay. आर बीइंग पार्ट ऑफ माई नो यूट्यूब जर्नी एंड माई बेसिकली इन दिस प्रोसेस। सो Yeah. तो I followed you on Instagram also. I messaged you for the guidance. So So it basically, was since one month. you people are the first one, so that way I'll have a no closer heart, closer no relation with you all. So that way in future also, as I grow, you all grow. So that will have a much higher confidence compared to others. So that way. So I hope I answered your question. You got Yeah, yeah. okay. So yeah, Thank you so much. thank you. Yeah, someone else. Hello. Hi, Krishna. Yeah, how do you pronounce your name? Shweta. Shweta. Okay. Yeah. Actually, I'm Yes, not able Shweta, if to. you okay. Yeah, I'm not able to start the video because I'm traveling now. Okay, no So problem. I have a question. Mhm. Sorry, I'll introduce myself first. I'm working in Infosys from last 3 years as a QA analyst. So I just wanted to switch my career. I was thinking to switch career from testing background to development, but after watching your video, Hmm. I got to know that testing has scope. Uh, So I thought that I will make a career in that only. okay. So I have a question like the main question is I got to know that SQL is must or ETL tester. Yeah. So after that, after SQL, what is the most important technology or what is the most important thing that should I focus on? I just wanted to. Hmm. Okay. Thanks, Shweta. Yeah, you can go on mute. There's a lot of noise going on. Yeah, yeah. Sorry for that. Yeah, no problem. I just don't want the recording to, so that maybe when I upload the video on YouTube, I don't want people to comment below saying that ज़्यादा noise आ रहा है करके. So before I answer your question, because your question, answer of your question is just one line. Basically, what is the next step after SQL, right? So, but before I say that, since you said टेस्टिंग में इतना वो नहीं है, तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरा सैलरी शायद डेवलपर से भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स, आई मीन डेवलपर्स जो 8-10 साल एक्सपीरियंस है ना, उनसे भी ज़्यादा होगा, मेरे को पता है। और क्योंकि और आई डोंट नो हाउ व्हाट एक्सपीरियंस और व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, बट जब मैं बात करता हूँ ना डेवलपर से, तो मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर द टेस्टिंग व्हाट आई हैव डन इज करेक्ट, ठीक है। मैं अपना टेस्टिंग, अगर मैं डिफेक्ट निकालता हूँ, एक बग निकालता हूँ ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं 2-3 बार टेस्ट करता हूँ। और जो क्या कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, बीआरटी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट से मैं पक्का वैलिडेट करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना मैं अगर 100% श्योर रहता हूँ, ठीक है, सो इफ आई एम सो श्योर दैट माई टेस्टिंग इज करेक्ट, आई विल श्योरली डोमिनेट द होल मीटिंग। जब भी टेक्निकल डिस्कशन वाली मीटिंग होती है, वेयर आई हैव टू से दैट दीज आर द डिफेक्ट्स, और इफ दे आस्क फॉर एनी अपडेट, सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट सेइंग दैट ये गलत है तो है, ठीक है। इवन इफ डेवलपर्स में गिव एनी नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो उस टाइम में मैं बहुत हैवी हो जाता हूँ। और अगर वो लोग बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं या डेटा इंजीनियर्स हैं, एंड सम ऑफ देम माइट बी हैविंग 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरा तो बस 6 साल का ही है, तो उस केस में भी मैं इतना मतलब वो कर देता हूँ कि क्लाइंट इज सो श्योर, क्लाइंट इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अनटिल अनलेस कृष्णा गिव साइन ऑफ, हम लाइव नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, एसक्यूएल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका नॉलेज यहाँ है,
But if that doesn't come out in the interview, then cracking the interview is little difficult. Then obviously salary part negotiation वो सब तो बात की बात है, बट टेक्निकल स्किल में पहले एसक्यूएल आनी चाहिए और फिर आपकी थ्योरेटिकल बहुत अच्छी होनी चाहिए. और एसक्यूएल बस ऐसे नहीं कि यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज. प्रॉब्लम एक ही होगा बट उसकी सोल्यूशन हमारे पास 2-3 तरह की होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर को लगे कि भाई ये बंदा चाहिए मुझे. समझ रहे हो ना आप? समझ लो कभी ऐसा एसक्यूएल आ गया मेरे को जिसमें मेरे को माइनस क्वेरी लिखना पड़ा. ठीक है, मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, माइनस दूसरी क्वेरी लिख दी. बट उसमें क्या है ना, हम जब माइनस क्वेरी लिख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है. तो हमको उसको क्या कर देंगे, हम उसको सब क्वेरी में लिख देंगे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जो भी है, वेयर से एम्प्लॉय नंबर इन फंक्शन लगा देंगे. फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टार में ऐसा कुछ कंडीशन डाल देंगे, वेयर क्लॉज डाल करके उसको छोटा बना, सब क्वेरी को छोटा बना देंगे कि सब क्वेरी का जो लोड है मेन क्वेरी पे कम पड़े. अगर हम माइनस लिखने जगह लग जाए तो 1 to 1 वो पूरा माइनस करते चला जाएगा, तो टाइम लग जाएगा. तो सब क्वेरी में हम सब क्वेरी को छोटा बना देंगे, सब क्वेरी का जो लोड आउटर क्वेरी में आए वो थोड़ा कम पड़े उसके ऊपर. तो आउटर क्वेरी becomes light because the inner query is lighter. So inner query is light, then outer query becomes lighter, then the output comes out faster. So you will have to make your thought process or problem solving skills in such a way that you can see the same problem in multiple ways and find the solution of it. So that is a critical point for you to become a cutting edge or become better than others. Yeah, to develop that obviously problem solving skills थोड़ा. Sorry. Yes, got it. सो वो चीज़ आ जाएंगे. फिर आपके थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट्स हो गए, टेस्टिंग प्रैक्टिसेस हो गए, फिर ईटीएल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस हो गए, ये सब चीज़ आपको थ्योरेटिकल अच्छे होने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इन बंदे ने काम किया है सही से. तो आपके आंसर होंगे इंटरव्यू में वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, इंटरव्यूअर को लगना चाहिए हाँ बंदे ने काम किया है, बड़ा अच्छा तगड़ा काम आता है इसको. ठीक है ना? तो आंसर थ्योरेटिकल आंसर सब कहेंगे व्हाट इज डेटा वेयरहाउस, सब बोलेंगे स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, सब बोल रहे हैं आंसर. बट आपके आंसर में कुछ तगड़ा होना चाहिए, भाई ये क्या पकड़ा इसमें. समझ लो ना? ऐसे सब आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल बोलने लग जाओगे, फिजिकल मॉडल बोलने लग जाओगे, तो ये सब बोलोगे हाँ अब बंदे को पता है यार. ठीक है ना? आप थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल सोचोगे ना तो वो आंसर अच्छा लगता है इंटरव्यूअर को. हमें तो इंटरव्यूअर को खुश करना है ना. इंटरव्यूअर को खुश करने के बाद में काम तो देख ही लेंगे, काम तो कैसे भी कर ही लेंगे क्योंकि उस टाइम में टाइम है. अभी आपको एक प्रॉब्लम मिला या यूजर स्टोरी मिला सॉल्व करने के लिए, देन यू हैव टाइम टू थिंक ओवर इट एंड इवन रिसर्च ओवर इट. बट वेयर एज इंटरव्यू शॉर्ट उसी टाइम टक टक आंसर देना. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Is there any sources to learn? Like, yes, there are many sources, but which sources you have gone through? So can you suggest? अभी के लिए तो मुझे W3 स्कूल से अच्छा लगा जहाँ से मैंने एसक्यूएल सॉल्व किए. और हैकर रैंक सब लोग बोलते रहते हैं बट मैंने ट्राई नहीं किया है. मे बी अब मैं ट्राई करूँ, ट्राई करके फिर देखता हूँ कैसा है, फिर उसके बाद रेकमेंड करूँगा. क्योंकि मैंने थोड़े टाइम के लिए हैकर रैंक ट्राई किया था बट मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा मैं. तो भी फ्रैंकली Perfect. सॉल्व नहीं कर पा रहा, Because डिमोटिवेट हो I गया. also have tried. हाँ, मैंने भी ट्राई किया बट लाइक होता है ना कि पहले इजी सॉल्व करो देन मीडियम देन हार्ड. बट मैं पहले ही हैकर रैंक पे गई एंड इट वाज लाइक बाप रे, आई कांट सॉल्व इट. मेरा ऐसे ही हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने बोला छोड़ने के बाद भी कुछ फर्क पड़ा नहीं. इंटरव्यू क्रैक किया हमने, अभी भी काम कर रहे हैं, फर्क इतना पड़ नहीं रहा. ठीक है ना? तो अभी मैं ट्राई करता हूँ हैकर रैंक. W3 स्कूल्स तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. फिर हैकर रैंक में ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और भी रिसोर्सेज एक्सप्लोर करता हूँ. फिर मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, ठीक है, कहाँ से हम ऑनलाइन रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हैं. That will help everyone. Most of the questions are coming. Thank you so much. ठीक है. स्वप्निल. यस सर. हाँ स्वप्निल, इफ यू डोंट माइंड आप वीडियो ऑन कर सकते हैं. अभी जस्ट उठा हुआ सो. अच्छा सो के उठे. नहीं मैं बस सोच रहा था वीडियो ऑन करेंगे तो सब देख सकते हैं. ठीक है. 2 मिनट में करो फ्रेश होके, तब तक आप दूसरे से बात कर लीजिए. आप ही हैं शायद लास्ट. ओके. मैंने जस्ट कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हाँ, तो अभी कुछ सामने करना था पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो बहुत जन डेवलपर सभी लोगों ने हैदराबाद में क्लासेस लगा लिए दोस्तों ने.
जावा डेवलपर पे। हम्म, पर मैंने जावा डेवलपमेंट सीखा थोड़ा, पर मुझे डेवलपमेंट में जाना ही नहीं था। हम्म, तो कोडिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो हम्म, इसलिए इसके तरफ टेस्टिंग के तरफ जाना था। तो हम्म, कम्प्लीटली स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना। हम्म। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ मेरा इंटरव्यू देख लिया ना आपने, बोले यार टेक्निकल में इतना पैसा हाँ। है, टेस्टिंग में इतना पैसा है, क्यों डेवलपमेंट करें हम लोग। नहीं ये नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। ठीक है। ओके, सो सबने लिया सही है। अब कब पास आउट किया आपने? 2021 सितंबर। 2021, 22 हो गया, 1 साल हो गया मतलब फिर। हाँ 1 ईयर अभी कंप्लीटेड हुआ। टेंशन तो बहुत होगा, समझता हूँ मैं। लड़कों का जब टेंशन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। मेरे को मैं हाँ बुरा मत माना लड़के लोग, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई मीन लड़कों को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है कि हाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अभी 22 साल हो गया, पास आउट कर लिया इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का ही शायद लोन वोन होगा तो वो बर्डन अलग है, तो टेंशन तो रहता है। नहीं आई नहीं नो, कुछ नहीं आई है। जस्ट, नहीं बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कैसा रहता हाँ है, हो सकता है तो इसीलिए रहता है। आई मीन नॉट ट्रेइंग कि लड़कियों को नहीं होता है, प्रेशर तो रहता है सबको, लड़कों को थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो या दैट वे, नो वरीज। हाँ, तो आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करेंगे? तो पहले आप देखिए, सबसे इजी तो ईटीएल टेस्टिंग की है, मैं बोलूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। नहीं, उससे इजी तो मैनुअल टेस्टिंग भी है, बट मैनुअल टेस्टिंग में फिर स्कोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे जैसे ए आई एम एल सब आ जाएंगे, फिर तो मैनुअल टेस्टिंग बंद हो जाएगा। तो मतलब अभी से 10 साल हाँ। तो लग जाएंगे कम से कम, बट वही 10 साल से पहले तो हमें तो रेडी रहना चाहिए, कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। दैट वे आई वुड से डेटा टेस्टिंग, जस्ट गो फॉर इट एंड सो स्टार्ट डेटा लर्निंग। टेस्टिंग। या जो मैं कर रहा हूँ, बिग डेटा टेस्टर हूँ ना मैं, तो बिग डेटा ओके टेस्टर, बीआई टेस्टर, डेटा वेयरहाउस टेस्टर, ईटीएल टेस्टर, जो भी आप बोलेंगे, तो ये सब मेरे को आता है। तो ये सब मैंने सीखा। तो आप डेटा टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डेटाबेस क्या हो सकता है, तो आप, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट उसमें लिखा है मैंने, क्या क्या थ्योरीज ओके पढ़नी है, फिर एसक्यूएल में क्या क्या सीखना है, तो ये सब सीख सकते हैं। तो आप थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, डेटा वेयरहाउस के बारे में सीखिए, डेटा वेयरहाउस, ईटीएल टेस्टिंग सब क्या होते हैं, ये सब सीखिए, थ्योरेटिकल पार्ट सीखिए। उसके बाद एसक्यूएल प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, वो आपके ओके। दोस्त लोग जावा वावा सीख रहे हैं, वो ठीक है, बट आपको एसक्यूएल तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप एसक्यूएल अगर अच्छा कर गए, मतलब एक ही लैंग्वेज सीखना है आपको पूरे इस करियर में, ठीक है। तो आप जैसे बिग हाँ डेटा की तरफ आएंगे, फिर आपके पास एच बेस, हाइव, स्काला, वो सब आ जाएंगे। बट अगर आपको नहीं भी हाँ सीखना तो एसक्यूएल तो सीखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज तो मैं हाँ बोलूँगा, और बहुत आसान भी है। सेलेक्ट स्टार है, मतलब हाँ। सेलेक्ट करो टेबल में से, सिंपल सी बात है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह है, थोड़ी सी, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो एसक्यूएल आप सीख जाओ बस। आपने एसक्यूएल सीख लिया, देन एवरीथिंग इज इजी। थ्योरेटिकल पार्ट यू हैव टू लर्न, ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर, सिंस मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड देन कमिंग ऑन टू आईटी। जब बीए हाँ वाला कर सकता है, आप तो फिर भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से, आप तो पक्का ही कर सकते हो। हाँ। ठीक है ना? मैं कर नहीं सकता ऐसा मैं बोला नहीं, कर सकता हूँ आराम यानी से। पक्का कर सकते हो, और बहुत जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हाँ पक्का कर सकते हो। मैं मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ ये आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं हाँ कर हाँ सकते। मैं बस मोटिवेशन के लिए बोल हाँ रहा हूँ कि अगर वो भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं तो हाँ। इतने खराब कॉलेज से आया हूँ, आप तो फिर भी अच्छे कॉलेज से आए होगे, नहीं तो आप पक्का कर नहीं। सकते हो। बस 3 से 6 महीने का अपने आप को टाइम दीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, पक्का हो जाएगा। अच्छा। ठीक है स्वप्निल, मैंने हाँ आंसर किया ना आपको? सोर्सेस। हाँ सोर्सेस का हाँ मैंने अभी बोला, जैसे कि मैं सोर्सेस का मैंने, देखो क्या क्या पढ़ना है वो तो बता दिया, सोर्सेस को मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, ये अच्छे अच्छे आर्टिकल। सोर्सेस निकाल के मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ फ्री पेड दोनों बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों 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 ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, एक आर्टिकल लिख अच्छा। दूंगा और मैं आपको बताऊंगा, हाँ ठीक है। हाँ। इंस्टाग्राम। ठीक है, नहीं नहीं, लिंक्डइन पे ही बताऊंगा मैं, लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखूंगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। ठीक है। और जॉब सर्च कैसे करना। आप पहले पढ़ाई कीजिए, जॉब सर्च के बारे में फिर बात करते ओ हैं। ठीक है ठीक रेज्यूम है। बनाइए, थैंक यू नौकरी थैंक नौकरी में डालिए, नौकरी में मिल जाएंगे ज़्यादातर। यू। वो ओके एक ओके थैंक इजीएस्ट यू। मेथड है। फिर बाकी तो अब हाँ हाँ। मेरे को खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी से मुझे मिला, तो वही अच्छा। इजीएस्ट मुझे लगा। लिंक्डइन से नहीं। लिंक्डइन पे मुझे भरोसा नहीं है इतना, शायद अभी तो अच्छा। पॉपुलैरिटी होगी, थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ गए हाँ शायद, मतलब आर्टिकल आर्टिकल हाँ लिखने हाँ लग गए, मैंने थोड़ा देख लिया हाँ कि ठीक है, तो यहाँ से एक बार ट्राई करेंगे। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ, और पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और कुछ सीख रहा हूँ, हाँ नई हाँ। टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से सब हाँ सीख हाँ। के नया कंपनी में ट्राई करूंगा। तब देखते हैं, अगर ओके लिंक्डइन से अच्छा लगा तो एक और वीडियो बना देंगे लिंक्डइन से कैसे ट्राई करना है करके, ओके ठीक है। ओके ओके। ठीक है थैंक सपनी। यू। हाँ विपुल, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हमारे पास बस 5 मिनट है।
ओके, ठीक है, नो वरीज। सिंस आप लोग क्या कहते हैं आए हैं, मेरी एक दोस्त है लीना सिंह, उनने भी ज्वाइन किया है। वैसे उनने एनरोल तो लेट में किया था, बट फिर मैंने उनको पर्सनली भेज दिया, वो ज्वाइन करना चाहते थे। तो लीना, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद रुचिता रुचिता ने जैसे 4 साल सिविल सर्विस से ट्राई किया। लीना सिंह हैं, वो मेरी दोस्त हैं, उनने 6 साल ट्राई किया और फिर अभी जाके बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में उनका लगा है, 1 साल से काम कर रही हैं। तो उनको भी मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया था। तो लीना, आप अगर थोड़ा सा 2 लाइन बोल सकते हैं तो। Yeah, mm, yeah. Hi, I'm Lina Singh. Actually, I tried 6 years आपका for आवाज़ ब्रेक हो रहा है लीना। in government exam. हाँ, Uh, हाँ बोलिए। Now fine. यस। Hello. हम्म, I tried 6 years for government exam, like every bank, railway, and PSC, every I mean government exam, but didn't get any I mean result, and finally frustrated and went Bangalore for I mean job purpose. So there I met with Krishna and I mean that time corona time, so I there was no I mean opportunity, so I was very upset. So that time Krishna encouraged me too much, and actually he was only person who I mean taught us how we can learn ETL, SQL, everything. I mean every day we prepare for 2 to 3 hour, 2 hour in morning and 1 2 hour in night time, like theory part and I mean SQL इसके part differently. So SQL, yeah. So like this we I mean we worked 2 3 months, na Krishna, two या 3 months continuous. We solved 150 70 question, 170 question in 2 months, 2 or 3 times we solved that question. And theory part, like Krishna used to take interview. I mean, we were four 5 friends. So Krishna used to guide us, like how can we give interview, how can we represent ourselves, because we don't have that knowledge, na interview knowledge. So he guided us in every step. I mean, everything he guided, and finally ओके। within 1 2 month, I mean in August I got job. I mean in August I prepare my I upload my resume. I think 10 11 August, and finally 30 August I had one offer letter from IQ. 15 दिन में, ठीक है। ओके लीना, Yeah. सॉरी, अभी रो देंगे लीना तो। ठीक है। ओके, एनीवे वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो ठीक है, थैंक यू ऑल। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड होप टू मीट यू ऑल, एंड आई नो बेसिकली all my wishes are with you to study well, work hard, crack interviews, get best amazing offers, make your parents proud, make your friends proud, make everyone proud of you. There will be a lot of hurdles, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, एंड लीना इज मच एल्डर टू मी, एंड वो आए सीखे, उनने भी क्रैक किया। सो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, फैमिली को बहुत प्रेशर रहता है एंड बहुत सारे कठिनाई रहेंगे, बट उसके ऊपर अगर आप चढ़ गए एंड आपने कुछ कर दिखाया ना, तो जो अपने लिए, और अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए, जो आपने मेहनत करोगे ना, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये ईटीएल टेस्टिंग सब सीखते हैं ना, और आपको कहीं जॉब नहीं भी मिलती है ना, प्लीज़ आप मुझे पिंग करना लिंक्डइन पे। कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ ना कुछ करके आपके लिए पक्का कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है।